This is chapter number 1 about computer system. I will provide you short response questions. Student, you must see the description because in the description I have given many links to important videos. Please, you must see the description of each video. Question number 1, what is a number system? Number system क्या होता है? A number system is a way of representing number. Number system एक way है जिसमें हम number को represents करते हैं, numbers को represents करते हैं. It uses a set of digits and a base. इसमें set of digits होते हैं और उसकी base होती है. For example, हम binary की बात करते हैं तो binary में digits कितने होते हैं? 0 digits होता है और 1 होता है और इसकी base कितनी होती है? Base इसकी 2 होती है. अगर हम octal की बात करते हैं तो octal में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक होती है और इसकी बेस 8 होती है. Computers use different number system for processing. Example include binary. Example include binary जिसमें binary number system, decimal number system, octal number system and hexadecimal system. Binary जिसकी बेस 2 होती है, decimal बेस 10 होता है, octal बेस 8 होती है और hexadecimal की बेस 16 होती है. Question number 2, what is the base रेडिक्स ऑफ अ नंबर सिस्टम? बेस किसी भी नंबर सिस्टम की बेस क्या होती है? द बेस ऑफ अ नंबर सिस्टम इज द नंबर ऑफ यूनिक डिजिट इट यूजेस. नंबर कितने यूनिक डिजिट्स यूज करती है ये? डेसिमल नंबर सिस्टम हैज बेस 10, बाइनरी नंबर सिस्टम बेस इज 2 एंड बेस डिटरमिन्स पोजिशनल वैल्यूज. What is the importance of positional value in number system? Number system में positional value का क्या importance होती है? Give 2 examples. Positional values means the value of a digit depend on its position. किस पे depend करती है? इसकी position पे depend कर रहे होते हैं. Each position has a weight based on the number system base. In decimal, 345 digit, 3 represents 300, 4 represents 40 and 5 represents 5 digit. In binary system, 101, the leftmost one represents 4 because you are writing 101, start from 1 to 4. This one worth is 4. The leftmost one represents 4. Positional value helps in number system convergence. Question number 4. What is a binary digit and why it is fundamental in computer system? A binary digit, that is bit. Bit stands for binary digit. Is the smallest unit of data in a computer. A bit can have only 2 values, 0 or 1. Computer uses binary because electronic circuits have 2 stable states, that is 0 for off and 1 for on. A group of 8 bit is called a byte. 8 bit अगर होंगे तो क्या होगा? Equivalent to 1 byte. और 1024 बाइट होंगे तो आपके पास कितने बनेंगे? 1024 बाइट होंगे तो आपके पास बनेंगे 1 किलोबाइट. Clear? Why are binary numbers more efficient for computer calculations than decimal numbers? Binary numbers matches the 2 states nature of electronic circuits. They simplifies hardware design using logic gates. Binary calculations are faster and more reliable. Binary reduces errors caused by electrical noise. Question number 6. What is the significance of the most significant bit MSB in signed binary numbers? The most significant bit MSB represents the sign of assigned binary numbers. ये किसको represent करती है? Sign को represent करती है. ये positive है या negative? MSB equal to 0 indicates a positive number, while MSB 1 indicate a negative number. 1 means negative number, 0 means positive number. It helps the computer distinguish between positive and negative values.
In signed numbers system, MSB determines the sign. Question number 7. Why is hexadecimal number system used in computers? Hexadecimal is a compact representation of binary numbers. किसकी representation होती है? Binary numbers की होती है. One hexadecimal digit represents the 4 binary bits. एक hexadecimal number को 4 binary bits के साथ represent किया जाता है. It reduces the length of binary numbers. It is easier for human to read and remember. Question number 8. What is the process to convert a binary numbers to its hexadecimal equivalent? Divide the binary numbers into a group of 4 bits from right to left. For example, एक नंबर मेरे पास लिखा हुआ है 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1. तो अगर मैंने ये बाइनरी नंबर लिखा, इसको मैंने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड द बाइनरी नंबर इनटू ग्रुप ऑफ 4 बिट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. ये मैंने 4 का ग्रुप बना दिया, ये मैंने 4 का ग्रुप बना दिया, फिर इसके बाद ये मैंने 4 का ग्रुप बना दिया, और ये अकेला था तो इसके साथ मैंने 3 0 लगा दिया. ठीक है, तो अब देखिए ये किसका बन गया. 0 1 1 1 1 ये 7 होता है, और ये होता है 8 + 3 11. 8 + 3 11. 11 को हम लिखते हैं b. ये होता है 8 + 3, ये भी 11 जो कि b होगा, और ये 0 आएगा. तो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है b 7. किसमें? हेक्साडेसिमल नंबर में. Convert each group into its equivalent hexadecimal equivalent. Combine the hexadecimal digits to obtain the final answer. Example, this is binary number A is 16. ये कैसे बना? 0 1 1 1 1. ये देखें यहाँ पे ये 4 डिजिट ये आ गए 1 2 3 0 3 3. फिर इसके बाद 0 1 0. ये 10 का कोड होता है. 8 + 2 10, और ये होता है 8 + 4 12, 12 + 2 14. 10 को हम A रिप्रेजेंट करते हैं, 14 हम E रिप्रेजेंट करते हैं. तो इसका आंसर क्या, फाइनल आंसर क्या बन गया? A is 16. How does ASCII and Unicode differ in character representation? ASCII कोड और Unicode में क्या डिफरेंस होता है और वो कैसे कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं? ASCII uses 7 or 8 bits to represent characters. Okay, it mainly support English letters and symbols. ASCII. Unicode uses more bits and support multiple languages. Unicode allows global character representation. Clear? ASCII cannot represent Urdu or Arabic characters, but Unicode can. Question number 10. Why is a coding scheme used in computers? Give 3 reasons. Coding scheme represents characters using binary values. They enable computers to store and process text data. They ensure standard representation across systems. They allow data exchange between different computer systems. What is the purpose of machine code in computer operations? Machine code का क्या purpose होता है? Machine code is the language directly understood by the CPU. कौन सी language? Machine code. वो direct understandable is to the CPU. It consists of instructions written in binary form. All high-level programs are converted into machine code for execution. Without machine code, the CPU cannot execute instructions. Question number 12. What is an operating system? Operating system क्या होता है? An operating system is a system software. System software होता है. It acts as an interface between users and hardware. ये act करता है एक interface जो कि user और hardware के दरमियान में होता है. It manages hardware and software resources, no doubt. Examples include Windows, Linux, and Mac operating system are the examples. Question number 13. State any 4 functions of an operating system. Number 1, memory management. Number 2, process management. Number 3, file management. Number 4, device management. Question number 14. What is the memory management and how does it work in an operating system? Memory management is performed by the operating system. Okay, it allocates and deallocates of the memory to different process.
during execution. It deallocates memory when program terminate. It improves system performance and prevents memory wastage. Question number 15. What is the process scheduling? Process scheduling क्या होती है? Process scheduling is handled by the operating system. It decide which process gets CPU time. अगर एक ही वक्त में 2 से 3 सी प्रोसेस इकट्ठे आ जाती है तो फिर CPU डिसाइड करता है कि उसने कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज करते हुए किसको एग्जीक्यूट करना है और कितनी देर के लिए एग्जीक्यूट करना है. Scheduling improves system efficiency. It enables multitasking. Question number 16. State 5 differences between a process and a thread. A process has its own memory space. A thread shares memory within the same process. Process creation is slower than thread creation. Thread requires less memory than process. Failure of thread may affect the entire process. Next question. Differentiate between multiprogramming and multitasking operating system. Multiprogramming keeps multiple programs in memory. Multitasking allows user to run multiple tasks simultaneously. एक ही वक्त में वो multiple tasks को run कर सकते हैं. Multitasking improve user interaction. Multitasking में user की interaction भी improve होती है. Question number 18. What is the real-time operating system and where it is commonly used? A real-time operating system responds within a fixed time limit. It is used where delay is unacceptable. जहां पे delay accept नहीं किया जाता. Common uses include medical devices and traffic control system. Question number 19. Differentiate between offline and online applications. Give one example of each. Offline application work without an internet connection. Internet के बगैर ही application run हो जाती है. Example Microsoft Word. Online application requires an internet connection. Examples like Google Doc, your email, OneDrive, like that. What is an application patch? Give key function of it. An application patch is a software update. It fixes bugs and security vulnerabilities. It improves performance and stability of the software. List 2 pros and 2 cons of on-premises hosting. It provides full control over data and infrastructure. कि आपने क्या करना है कि आपकी साइट पे ही आपने होस्टिंग की हुई है, किसी दूसरी जगह पे आपने अपना सर्वर नहीं रखा हुआ. It provides full control over data and infrastructure. It offers better security. It has high installation and maintenance cost. Skilled technical staff is required. Yes. What is the cloud computing? Cloud computing क्या होती है? Cloud computing provides computing services over the internet. It enables storage, software, and processing power. Users do not need to manage physical hardware. Examples include Google Drive and Microsoft OneDrive. Question number 23. Differentiate between system software and application software. System software control hardware operations. Application software perform user-specific tasks like Word, Excel, PowerPoint. Operating system is system software. Microsoft Word is an application software. Why is computer security important? It protects data from unauthorized access. It prevents data loss and misuse. It ensures privacy of user. It protects systems from malware and attacks. This is chapter number 2, Computational Thinking and Algorithm. इस चैप्टर में मैं शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस को कवर अप करूंगा और ये शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन पूरे चैप्टर में से होंगे. व्हाट इज कंप्यूटेशनल थिंकिंग? कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या होती है? कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच. क्या चीज होती है जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच यूज की जाती है, उसको हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग कहते हैं. इट इन्वॉल्व एनालाइजिंग प्रॉब्लम. इसमें प्रॉब्लम को एनालाइज भी करते हैं लॉजिकली एंड सिस्टमैटिकली. कैसे एनालाइज करते हैं? थ्रू लॉजिकली एंड सिस्टमैटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से. नंबर 3, इट हेल्प्स डिजाइन सोल्यूशन. इसके बाद थर्ड स्टेप क्या होता है? जैसे कि ये 3 स्टेप बताएंगे. पहले स्टेप में थिंक करते हैं, दूसरे में एनालाइज करते हैं, तीसरे में हम सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं. इट हेल्प डिजाइन सोल्यूशन दैट कंप्यूटर्स कैन एग्जीक्यूट.
इट इज एन एसेंशियल स्किल्स फॉर प्रोग्रामर्स, और ये प्रोग्रामर के लिए एक एसेंशियल स्किल्स होती हैं। व्हाट इज मेंट बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग इन कंप्यूटिंग? कंप्यूटिंग में प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्या मतलब होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू अ गिवन प्रॉब्लम। मीन प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या कहते हैं, हम जो दी गई प्रॉब्लम के का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट, इसमें हम प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं। लॉजिकल स्टेप्स आर प्लान टू रीच अ करेक्ट सॉल्यूशन, इसके लिए हम क्या करते हैं, लॉजिकल स्टेप्स उसके प्लान करते हैं। इसका लॉजिकल फ्लो क्या होगा, सबसे पहले हम किस पार्ट को सॉल्व करेंगे, और उसके बाद सेकंड पार्ट क्या होगा, थर्ड पार्ट क्या होगा। इस तरह हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। इट इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर राइटिंग एनी प्रोग्राम, मींस प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन डीकंपोजिशन इन कंप्यूटेशनल थिंकिंग। डीकंपोजिशन क्या होती है कंप्यूटेशनल थिंकिंग में? Decompose means a big problems can be categorized into different smaller problems. Decomposition means breaking a complex problems into a smaller parts. वही बात इसने क्या किया कि बड़ी प्रॉब्लम को ब्रेक आउट करके हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि हम इजीली उसको सॉल्व कर सकें। ईच पार्ट इज सॉल्व्ड इंडिविजुअली, हर पार्ट को इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद हम क्या कर देते हैं, लास्ट में कंबाइन कर देते हैं या उनको मर्ज कर दिया जाता है उनके सॉल्यूशंस को। इट मेक्स लार्ज प्रॉब्लम इजियर टू मैनेज, इससे क्या होता है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को हम इजीली मैनेज कर सकते हैं। इट इंप्रूव्स क्लैरिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन इन सॉल्यूशन, तो ये इसके ये पॉइंट्स हैं। व्हाट इज अ पैटर्न रिकॉग्निशन? पैटर्न रिकॉग्निशन क्या होती है? पैटर्न रिकॉग्निशन इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग सिमिलरिटी अमंग प्रॉब्लम। पैटर्न रिकॉग्निशन में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि मशीन किस पैटर्न्स को इजीली रिकॉग्नाइज कर देती है, आइडेंटिफाई कर सकती है कि ये पैटर्न और ये पैटर्न दोनों में सिमिलरिटी है। इट अलाउज रीयूज ऑफ सॉल्यूशन फॉर सिमिलर प्रॉब्लम्स, तो इसलिए क्या किया जाता है कि हम एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस डिफाइन करके रख लेते हैं, तो हम देखते हैं कि अगर सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम हो तो वो इस सॉल्यूशन को रीयूज कर सके। इट रिड्यूसेस एफर्ट्स एंड सेव टाइम, इससे क्या होता है, इससे हमारी एफर्ट्स भी रिड्यूस हो जाती है और हमारा टाइम भी बच जाता है, क्योंकि हम उस पैटर्न से डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं that having a similar kind of patterns. It improves efficiency in algorithm design, और इससे क्या होता है, algorithm design की efficiency भी improve होती है। What is abstraction in computational thinking? Abstraction क्या होती है? Abstraction focuses on important details only. They are focused only important details. No unnecessary information is ignored. जो unnecessary information होती है उनको इग्नोर किया जाता है। It just focus on main part of the problem. It simplifies complex problems. It helps create generalized solution. Question number 6, what is an algorithm? Algorithm क्या होता है? An algorithm is a step-by-step methods to solve a problem. ये एक स्टेप बाय स्टेप मेथड है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। Number 2, it must be clear and well defined. Our algorithm should be must be clear और well defined होना चाहिए। It should produce correct output. हमारा algorithm की definition ये भी है कि it should be in a finite. उसकी output आनी चाहिए उसकी, ठीक है। ये ऐसा algorithm नहीं होना चाहिए जो infinity को approach करे, और उसकी correct output होनी चाहिए। Algorithms are written before coding. और ये कौन सी स्टेज में आते हैं, ये कोडिंग से पहली स्टेज में एल्गोरिथम लिखे जाते हैं। आप एल्गोरिथम को देखते हुए ही कोडिंग लिखते हैं। स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड एल्गोरिथम। एक गुड एल्गोरिथम की क्या खासियत होती है? इट हैज क्लियरली डिफाइंड इनपुट्स एंड आउटपुट। एक अच्छा जो एल्गोरिथम लिखा होता है उसमें क्लियरली डिफाइन किया जाता है कि इसकी नंबर ऑफ इनपुट्स क्या है और वो इनपुट्स कैसे लेगा और उसकी आउटपुट क्या है।
इट हैज फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा था, ये इसकी एक वन मीन्स one of the most important characteristics is that it should be a finite number of steps. Each step is precise and unambiguous. हर step बिल्कुल precise होना चाहिए, correct होना चाहिए और ambiguous नहीं होना चाहिए. Ambiguous means two way. कोई भी चीज के टू वेज नहीं होने चाहिए, ambiguity नहीं होनी चाहिए, बल्कि unambiguous होना चाहिए. It terminates after completing the task, और वो algorithm must be completed, must be terminating after some specific time, after some specific requirement, after completing the task. What is the role of input in algorithm? एक algorithm में input का क्या role होता है? Input provides the required data to solve a problem. ये क्या करती है? ये required data provide करती है किसी भी problem को solve करने के लिए. For example, मैं कहता हूं कि आपने factorial निकालना है, किसका निकालना? आप input देंगे. मैं कहता हूं कि नंबर 6 का factorial निकालना है, तो 6 should be an input. मैं कहता हूं नंबर 10 का निकालना, तो यहां पे 10 क्या इनपुट होगी. आप डेटा प्रोवाइड करेंगे तो एल्गोरिदम वहां तक चलेगा. इट इज गिवन बिफोर एल्गोरिदम एग्जीक्यूशन. यस, एल्गोरिदम एग्जीक्यूशन तब ही पॉसिबल है जब वो इनपुट लेगा. करेक्ट इनपुट लीड्स टू करेक्ट प्रोसेसिंग. अगर आप सही इनपुट देंगे तो आप तब ही उसको सही डायरेक्शन में अप्रोच कर सकेंगे. Input affects the final output of the algorithms. Yes. What is the output in an algorithm? एक algorithm की output क्या होती है? Output is the result produced by an algorithm after processing. एक processing के बाद जो algorithm result produce करता है उसको हम output कहते हैं. It appears after algorithm execution. और ये कहाँ पे display होती है? After execution of the program, after execution of the algorithm, then you can see the final output. Output shows whether the algorithm works correctly or not. Output is based on the given input and processing step. Output किस चीज पे बेस कर रही होती है? आपकी इनपुट जो आप प्रोवाइड करते हैं प्लस प्रोसेसिंग पे, उसकी प्रोसेसिंग कैसी होती है. क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज अ फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट क्या होता है? अ फ्लो चार्ट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम. किसी भी एल्गोरिदम को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में शो करने को हम कहते हैं फ्लो चार्ट. इट यूजेस स्टैंडर्ड सिंबल्स टू रिप्रेजेंट स्टेप्स एंड डिसीजंस. इट शोज द फ्लो ऑफ कंट्रोल इन अ सॉल्यूशन. फ्लो चार्ट मेक्स एल्गोरिदम इजी टू अंडरस्टैंड. व्हाट इज अ सूडोकोड? सूडोकोड क्या होता है? A pseudocode is an informal way of writing algorithm. इसमें क्या लिखा जाता है? Informal way है. किसका? Writing of algorithm का. कि हम algorithm कैसे लिखते हैं? It uses simple English like statements. ये आप simple English में इसको statement लिखते हैं. It is independent of programming language. और ये pseudocode क्या होता है और algorithm क्या होती है? ये programming language पे depend नहीं करते. ये इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स इसमें ख्याल नहीं, सिंटैक्स का ख्याल नहीं रखा जाता, सिमेंटिक का फिर भी ख्याल होता है. इट हेल्प प्लान प्रोग्राम्स बिफोर कोडिंग. और ये भी क्या करती है? हेल्प्स प्लान प्रोग्राम बिफोर कोडिंग. कोडिंग से पहले ये सब स्टेप्स हैं जिसमें हम सूडो कोड लिखते हैं, फ्लो चार्ट लिखते हैं और एल्गोरिथम लिखते हैं. डिफरेंशिएट बिटवीन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट. एक फ्लो चार्ट में और एल्गोरिथम में क्या डिफरेंस होता है? एन एल्गोरिथम इज रिटन इन स्टेप बाय स्टेप टेक्स्ट फॉर्म. एल्गोरिथम किस में लिखा जाता है? एक टेक्स्ट फॉर्म में लिखा जाता है. while फ्लो चार्ट इज अ डायग्रामेटिक फॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है फ्लो चार्ट की. एल्गोरिथम्स आर क्विकर टू राइट. फ्लो चार्ट्स आर इजियर टू विजुलाइज एंड ट्रेस. विजुलाइज करने के लिए और एग्जीक्यूशन को ट्रेस करने के लिए हम फ्लो चार्ट यूज करते हैं. डिफरेंशिएट बिटवीन एन एल्गोरिथम एंड सूडोकोड्स. एल्गोरिथम और सूडोकोड में क्या डिफरेंस होता है? एन एल्गोरिथम मे बी रिटन इन plain English, plain language. Pseudocode uses programming like structures such as if, else, loop. एल्गोरिथम जस्ट प्लेन लैंग्वेज में लिखा जाता है, जबकि सूडोकोड में हम
सिंपली इफ एल्स के तरह के सिंटैक्स भी लिख सकते हैं। Pseudocode is closer to actual code than a general algorithms. Both help in planning before coding. What is meant by a dry run of an algorithm? किसी भी एल्गोरिदम के ड्राई रन का क्या मतलब होता है? A dry run means testing an algorithm step by step. Dry run का मतलब होता है कि आप किसी भी एल्गोरिदम को स्टेप बाय स्टेप उसको देखें कि वो कैसे आउटपुट शो करता है। Sample input values are used. It helps identify logical error. किस लिए यूज किए जाते हैं लॉजिकल एरर? आपको पता है कि एरर कितनी तरह की होती है? एरर 3 तरह की होती है। लॉजिकल एरर होती है, सिंटैक्स एरर होता है और इसमें होता है कि और रन टाइम एरर होता है। क्लियर? तो लॉजिकल एरर इज डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज बिकॉज सिंटैक्स एरर can be detected by a compiler or interpreter. It ensures correct output before implementation. What is debugging? Debugging क्या होती है? Bug होता है error means कोई उसमें problem आ जाना, debug होता है उसको remove कर देना। Debugging is the process of finding error in a program or solution. Errors are corrected to ensure correct output. It improves program reliability and correctness. Debugging is an essential programming skills. What is logical reasoning in problem solving? Logical reasoning is the ability to think logical and systematically. It helps in decision making during problem solving. It improves accuracy in algorithm. Logical reasoning is essential for programmers. Why is step-by-step thinking important in programming? Computers follow instruction step by step. आपको पता है कि कंप्यूटर कैसे इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है? फ्रॉम टॉप टू बॉटम और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सीक्वेंस वाइज इसको एग्जीक्यूट करता है। लेकिन जहां पे इफ एल्स लगा के हम कुछ नंबर ऑफ स्टेटमेंट को स्किप भी करवा सकते हैं और कुछ को रिपीट भी करवा सकते हैं बाय यूजिंग अ लूप। लॉजिकल स्टेप्स प्रिवेंट मिस्टेक्स एंड कंफ्यूजन। स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग इंप्रूव्स प्रोग्राम एक्यूरेसी. It makes solution easier to test and debug. What is meant by decision making in algorithm? Algorithm में decision making क्या होती है? Decision making means choosing between alternatives in a solution. तो हम क्या करते हैं? हम इसमें decision making करते हैं। हम देखते हैं कि अगर ये conditions true हो तो ये काम करेगा, अगर ये condition false होगी तो ये काम करेगा, उसको हम decision making कहते हैं। Conditions are used to make decisions such as if else. तो उसमें हम कंडीशन यूज करते हैं और कंडीशन के यूज करने के लिए हम इफ लगाते हैं, एल इफ लगाते हैं, एल्स लगाते हैं और इफ एल्स लगाते हैं, डिपेंड्स ऑन द प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर. इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ एन एल्गोरिथम. इट इज यूज्ड व्हेन डिफरेंट आउटपुट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट इनपुट्स. व्हाट इज रिपीटिशन इन एल्गोरिथम? मींस लूप. Repetition means executing steps multiple times. As I told you, you can repeat certain number of steps again and again until a given some specific time, means some specific number of times you can repeat some number of steps. Loops are used for repetition such as for loop, while loop, and for next, like that. It reduces code duplication. इससे क्या होता है कि हम जो सिंटैक्स स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो हम उस स्टेटमेंट्स को बार बार नहीं लिखते, बल्कि हम क्या कर देते हैं, हम उधर लूप लगा देते हैं। और लूप की खासियत होती है certain number of steps can be repeated again and again until the given condition will be true. It is useful when the same task must be repeated. What is meant by efficiency in algorithm? Algorithm में efficiency का क्या मतलब होता है? Efficiency means using minimum time and resources to solve a problem. ये बहुत important factor है किसी भी algorithm में, उसकी efficiency. आपके algorithm always efficient होने चाहिए. Means ऐसे algorithm लिखिए जिसमें आपका algorithm कम से कम number of resources use करे और कम से कम वक्त में उसको सॉल्व करे विद एक्यूरेट रिजल्ट के साथ.
आप उसको ऑप्टिमाइज करें। Efficient algorithms run faster, they use less memory, efficiency improve overall performance of the program। अगर आपके एल्गोरिथम में एफिशिएंसी होगी तो उसकी परफॉर्मेंस होगी और वो कि ऐसे डेडलॉक में नहीं फंस जाएगा जहां से आउटपुट ना आए। What is the importance of planning before coding? Planning helps understand the problem clearly and quickly. It reduces errors in the final program. It saves time during coding and debugging. It produces a well-structured and organized solution। Question number 22. Why are algorithms important in computing? Computing में algorithm क्यों important होते हैं? Algorithm provide a clear plan to solve problem. They reduce complexity in a programming. They improve program efficiency. They help solve problems systematically point of view। What is generalized solution? Generalized solution क्या होता है? A generalized solution works for multiple similar problems. It avoids repetitive problem solving. It saves time and efforts. It improves reusability of the solution। ये इसमें points होते हैं। ये generalized solution क्या होता है? जिसमें generalized solution हो, repetition हो, time and efforts should be saved and it can be used for multiple times। What is modular design in problem solving? Modular design means modular design divide a solution into a smaller module। Each module perform a specific task और उसमें हर specific task को perform करता है हर module। It makes program easier to understand and modify. It simplifies maintenance and improves organization। Why is computational thinking important for students? It helps to develop logical and analytical thinking. It improves problem solving skills. It prepares students for programming and technology fields. It helps students solve real life problems systematically। This is chapter number 3 about programming fundamentals। What is a program? Program क्या होता है? A program is a set of instructions written to perform a specific task। कोई एक specific task को perform करने के लिए हम कुछ instructions लिखते हैं जिसको हम program कहते हैं। It tells the computer what to do step by step। इसमें हम क्या बताते हैं कि कंप्यूटर को कि आपने स्टेप बाय स्टेप क्या काम करना है और कैसे करना है। प्रोग्राम्स आर रिटन यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई भी प्रोग्राम जो लिखा जाता है वो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज करके लिखा जाता है। एग्जाम्पल, अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट मार्क्स और डिस्प्ले अ रिजल्ट। व्हाट इज प्रोग्रामिंग? Programming is the process of writing instructions for a computer. It includes designing logic, written code, testing and debugging। क्या चीजें होती है इसमें? पहले लॉजिक को डिजाइन किया जाता है, फिर कोड को लिखा जाता है और उस कोड को टेस्ट किया जाता है और बाद में डिबग किया जाता है, टेस्ट किया जाता है कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर हो तो उसको रिमूव किया जाता है। प्रोग्रामिंग इज यूज्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स यूजिंग कंप्यूटर्स। तो हम क्या करते हैं? प्रोग्रामिंग के थ्रू हम इन डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं यूजिंग कंप्यूटर। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए यूज की जाती है। व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ फॉर्मल लैंग्वेज यूज्ड टू राइट प्रोग्राम। It provides rules, syntax to write instructions। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको हम सिंटेक्स कहते हैं। हमें उनको फॉलो अप करना होता है ताकि हम एक वैलिड और ऑप्टिमाइज और एक सही तरीके से प्रोग्राम लिख सके। लैंग्वेजेस हेल्प ह्यूमन कम्युनिकेट विद कंप्यूटर्स। एग्जांपल, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, C++, जावा। These are the names of programming languages। Differentiate between compiler and interpreter।
कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस होता है? A compiler translates the whole program into machine code at once. For example, ये आपके पास एक कंपाइलर है, कंपाइलर में ये सपोज प्रोग्राम लिखा हुआ है और ये कंपाइलर कन्वर्ट करेगा। कंपाइलर पहली लाइन को रीड करेगा, दूसरी लाइन को, तीसरी लाइन को, इसमें एरर था, इसमें भी एरर था, इसमें नहीं एरर था। तो इसने क्या किया, जब कन्वर्ट करने लगेगा तो देखेगा कि इफ दिस प्रोग्राम इज एरर फ्री, अगर इसमें कोई एरर नहीं होगा तो इसको कन्वर्ट कर देगा। तो इसका मतलब यह क्या हुआ, उसने पहले सारी की लाइन, जितनी भी लाइंस ऑफ कोड लिखा हुआ उस सबको रीड करेगा, तो फिर बाद में कन्वर्ट करेगा अगर एरर नहीं होगा तो। ये कंपाइलर का काम है। A compiler translates the whole program into machine code at once. An interpreter translate and execute code line by line. इंटरप्रेटर क्या काम करता है, सपोज ये आपने प्रोग्राम लिखा हुआ है और आपने इंटरप्रेटर यूज करना है। ये लाइन ऑफ कोड था, इंटरप्रेटर ने पहली लाइन को गेट किया, इसको कन्वर्ट कर दिया, दूसरी लाइन को लिया, इसने कन्वर्ट कर दिया, तीसरी लाइन को लिया, इसमें एरर था तो इधर स्टॉप कर देगा। ठीक है, ये इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है। कंपाइल प्रोग्राम run faster after compilation. Interpreted programs are easier to test during development. What is an error, bug in a program? An error or bug is a mistake in a program that causes wrong output or failure. Bugs may stop the program from running or produce incorrect result. अगर bugs होगा तो क्या होगा, आपका प्रोग्राम सही तरीके से रन नहीं करेगा या सही तरीके से वो आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करेगा। Error can occur due to wrong syntax or wrong logic. Debugging is done to remove bugs. What is debugging? Debugging means to remove the errors from the program. Debugging is the process of finding and fixing error in a program. It helps make the program run correctly. Debugging improves accuracy and reliability of software. Tools like breakpoints and step execution help in debugging. What is syntax error? Give an example. A syntax error happens when code grammar rules are violated. Syntax error उस वक्त होता है जब हम किसी भी लैंग्वेज के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो अप नहीं करते, तो then we are able to face syntax error. The program usually does not run due to syntax error. Example idea: missing brackets, semicolon or wrong brackets or colon missing from the code. Syntax error are detected by compiler or interpreter. ये इजी होता है, ये एरर को फाइंड आउट इजी का होता है, क्योंकि आप फाइंड करें या ना करें वो कंपाइलर आपको पकड़ लेगा या इंटरप्रेटर आपको पकड़ लेगा, यहाँ पे आपने एरर किया है। मोस्ट डिफिकल्ट एरर इज द लॉजिकल एरर। व्हाट इज लॉजिकल एरर? गिव एन एग्जांपल आइडिया। यहाँ पे लॉजिकल एरर का भी पूछ लिया। नेक्स्ट, अ लॉजिकल एरर अकर्स व्हेन प्रोग्राम लॉजिक इज इनकरेक्ट। आपने लॉजिक उसमें रॉन्ग यूज की, इनकरेक्ट यूज की है। द प्रोग्राम रन्स बट प्रोड्यूस रॉन्ग आउटपुट, और इसको ट्रेस आउट करना डिफिकल्ट होता है क्योंकि प्रोग्रामर मीन इंटरप्रेटर और कंपाइलर इसको गेट नहीं करेगा। एग्जाम्पल आइडिया: यूजिंग प्लस इंस्टेड ऑफ माइनस इन अ फार्मूला। यस। लॉजिकल एरर आर फाउंड बाय टेस्टिंग एंड ड्राई रन्स। व्हाट इज रन टाइम एरर? गिव एन एग्जाम्पल। A runtime error occurs while the program is running. जब प्रोग्राम रन कर रहा होता है उस वक्त रन टाइम एरर आ जाता है। जैसे कि आपने क्या करना है, आपने लिखा हुआ C इक्वल टू A डिवाइडेड बाय B। अगर तो आप A की वैल्यू लिखते हैं 10 और B की वैल्यू आप लिखते हैं 2 तो ये सही काम करेगा। लेकिन अगर आपने B की वैल्यू अगर 0 लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 0 जो कि इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो दिस इज कॉल्ड रन टाइम एरर। It may crash the program during execution. Example idea: dividing by 0 or accessing an invalid index. Runtime errors are found during execution or testing. What is a variable? Variable क्या होता है? A variable is the named memory location used to store data. ये क्या होता है, मेमोरी में एक नाम दिया जाता है, वहां पे डेटा को स्टोर किया जाता है। Its value can change during program execution. Variables store numbers, text, and other data types. Example:
let marks equal to 85. Marks is a variable name. What is the data type? A data type defines the type of data stored in a variable. It tells how much memory is needed and what operations are allowed. Common type of data types are integer, float, string, boolean. Integer में क्या होता है? Just you can store whole number like 10. Float में क्या होता है? आप point by value भी store कर सकते हो like 10.30. String में क्या होता है? Just आप alphabetically data store करते हैं. Boolean में क्या होता है? आपके पास true या false store कर सकते हैं. Correct data types help avoid errors. What is an operator? Give an example. Operator perform operations on values or variables. Examples: arithmetic operator like plus, minus, multiplication, division, comparison, equal, double equal, greater than, less than, greater than equal to, or less than equal to, or not equal to. Assignment operator is equal to. Logical operators are and or not, or and or pipe sign. What is an array? Array is used to store multiple values in a single variable. अगर आपने 5 वैल्यू स्टोर करनी है एक सिंगल वेरिएबल में तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक अरे डिक्लेयर करना पड़ेगी. सपोज अरे का नाम A है और इसमें वैल्यू 10, 20, 30, 40 और 50 आप स्टोर कर रहे हो. हर वैल्यू को आप इंडेक्स नंबर के साथ इसके एक्सेस करेंगे. A of 1, A of 2, A of 3, A of 4 और इंडेक्स नंबर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0. Elements are accessed using index number. जैसा कि मैंने आपको बताया पहले. Array help manage a collection of related data. Example idea: const number equal to 1, 2, 3, 4, 5. And list 3 key differences between array and list. Size. Array are often fixed size. Lists are dynamically grow and shrink. Memory point of view, arrays use contiguous memory. List may use separate linked memory. Access point of view, array provide fast random access. List may require traversal. How is unit testing and when adding a functions to an already written program? Unit testing check a single function or module for correctness. When adding a function, write test cases for normal inputs and expected outputs. Test boundary and invalid inputs to ensure error handling. टेस्ट बाउंड्री को और इनवैलिड इनपुट को आपको हैंडल करना पड़ेगा इसमें. Run all tests to ensure existing parts are not broken. Regression prevention. This improve reliability and maintainability of the program. How are breakpoints useful in debugging? Elaborate with help of an example. A breakpoint pauses execution at a selected line of code. It allows checking variable values and program flow step by step. Example: in a loop, some programs set a breakpoint inside the loop. Observe how some changes each iteration to find where logic goes wrong. Breakpoint reduce guessing and help locate error quickly. Give an example where backend level development may not be required and all functions are handled by front end. Example: a simple static portfolio website made using HTML, CSS and JavaScript. को एक स्टैटिक वेबसाइट किससे बनाई जाती है? ये 3 चीजें यूज की जाती है: HTML, CSS and JavaScript. It can include menu navigation, form validation, calculator and animation using JavaScript. No database or server-side programming is required. Everything runs on the client-side browser. Question number 18. What are the TD, TH and TR tags used for? Explain with the help of an example. TR is used to create a table row. TH is used for table headings like header cells. TD is used for table data cells. Example: first row heading name marks second row data LA and 85. Find errors in the following code. const myArray equal to, ये ब्रैकेट स्टार्ट कर दी, ब्रैकेट क्लोज कर दी, यही एरर होगा. डॉक्यूमेंट डॉट राइट में पैराग्राफ में आपने लिखा myArray इक्वल टू, आगे array of 1 इंडेक्स नंबर से आपने इसको एक्सेस करने जा रहे हैं. एरर: array must be square brackets not parentheses. करेक्ट: कांस्टेंट array आपने ये ब्रैकेट लगा देनी है स्टार्ट में और लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट्स. Then myArray1 correctly gives the second elements like 3.14. Find error in the following code.
const my array equal to apple 3.142 orange document.write my array. तो यहाँ पे क्या एरर है? Values are not stored in array, comma, do not create an array. Correct. Const array equal to स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है आपने और फिर आपने क्या करना है, ये वैल्यू लिख देनी है इसमें, जो स्ट्रिंग वैल्यू होगी उसको डबल कोटेशन में, बाकी दूसरी वैल्यू को आपने वैसे लिख देना, कॉमे के साथ सेपरेट करना है. Now they array can be displayed or indexed properly. Find error in the following code. For I equal to 0, I less than equal to numbers dot length I plus plus, output plus equal to numbers of I plus. Output क्या होगी इसमें क्या error है? I less than equal to numbers dot length goes out of range at the last step. क्योंकि आपको पता है इंडेक्स ऑलवेज एक कम होता है, 0 से स्टार्ट करेंगे तो लेस देन इक्वल टू तक नहीं लेके जाएंगे, ओनली लेस देन तक रखेंगे हम. करेक्ट. यूज आई लेस देन नंबर्स डॉट लेंथ. Improvement, declare I as let I to avoid global variables. Question number 22. Find error in the following code. I equal to numbers dot length, I less than equal to 0, I minus minus, output plus equal to numbers of I. Error. Start index should be numbers dot length minus 1. ये भी आपने, क्योंकि ये numbers dot length उसका लेंथ बता देगी टोटल, आपने क्योंकि इंडेक्स रिवर्स से स्टार्ट करना तो एक कम करेंगे. कंडीशन शुड बी I ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि 0 एग्जिस्टिंग करता है इसलिए 0 तक मूव करेंगे, नॉट I लेस देन 0 तक. Correct. For let I equal to numbers dot length minus 1, I greater than equal to 0 or I minus minus. What is the purpose of comments in the programming? Comments explain code logic for humans. They help in understanding, maintaining and updating the program. Comments are ignored by the compiler or interpreter. ये सिर्फ प्रोग्रामर के लिए होते हैं. Comments improve documentation and teamwork. Why is proper indentation important in code? Indentation improves readability of the code. It helps identify blocks, loops, condition, functions. It reduces mistakes during debugging and maintenance. It is a professional coding practice. Why is debugging important in software development? Debugging finds and remove errors to ensure correct output. It improves reliability and performance of the software. It prevents crashes and unexpected behavior. It helps deliver quality software to user. This is chapter number 4 about data and analysis. I will cover all possible short response questions from this chapter. What is data? Data क्या होता है? Data is a collection of raw facts and figure. Raw facts and figure होता है. जैसे मैंने कहता हूं, मैं लिखा 16 क्या है आपको नहीं पता. अगर मैं कहता हूं कि टुडे इज 16 मार्च, it means no, this is clear. It means this is information. Data can be numbers, text, images or symbols. By itself data has no meanings, क्योंकि डेटा का कोई मीनिंग नहीं होता है. इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल होती है. डेटा इज प्रोसेस टू प्रोड्यूस यूजफुल इंफॉर्मेशन. डेटा पे प्रोसेसिंग की जाती है ताकि ये आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके. व्हाट इज इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड डेटा. ये प्रोसेस्ड होता है और इसमें ऑर्गेनाइज्ड डेटा होता है. इट हैज मीनिंग एंड यूजफुलनेस. ये दो पॉइंट्स इसके होते हैं, मीनिंगफुल और यूजफुलनेस होती है. इंफॉर्मेशन हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. आपके पास इंफॉर्मेशन होती है, आप इंफॉर्मेशन से यू कैन टेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजंस विद डिफरेंट ऑप्शंस. एग्जाम्पल, मार्कशीट जनरेटेड फ्रॉम स्टूडेंट मार्क्स. Differentiate between data and information. Data is raw and unprocessed, while information is processed and meaningful. Data has no context, information has context. Data is input, information is output. What is data analysis? Data analysis क्या होता है? Data analysis is the process of examining data
in different point of view. It helps discover pattern and trends. ये क्या करता है, इससे हमें देखते हैं कि ये किस तरह का पैटर्न मूव कर रहा है और क्या ट्रेंड आ रही है इसमें. Analysis converts data into useful information. It supports decision making. Why is data analysis important? Data analysis important क्यों होता है? It helps in making informed decisions. It identifies errors and inconsistencies in data. It reveals patterns and trends. It improves planning and performance. What are the types of data? Data कितनी तरह का होता है? Qualitative data means describe non-numeric data, while quantitative data is numeric data. Quantitative data can be discrete or continuous data. Example, names, qualitative, marks, quantitative. What is qualitative data? Give an example. Qualitative data describes qualities or characteristics. It is non-numeric in nature. It answers questions like what, how, or which type of questions. Example, gender, color, grade. What is quantitative data? Give an example. Quantitative data is numeric data. It can be measured or counted. It is used in calculation and statistics. Example, age, marks, height, like that. What is discrete data? Discrete data consists of whole numbers. It is countable. It cannot take fractional values. Example, number of students, number of books. What is continuous data? Continuous data can take any value within a range. It includes fractional values. It measured rather than counted. Example, height, weight, temperatures. What is data collection? Data collection is the process of gathering data. Data can be collected manually or electronically. Accurate data collection is essential. Poor data collection leads to wrong analysis. Yes. What are the sources of data? Primary data, directly collected data. Secondary data, secondary sources, already existing data. Primary data is more reliable as compared to secondary data. Secondary data save time and cost. What is data organization? Data organization arranges data systematically. It makes data easy to understand. Organized data support better analysis. Example is like tables, lists, spreadsheets. What is data interpretation? Data interpretation explains the meaning of data. It draws conclusions from analyzed data. It helps in decision making. Interpretation converts information to knowledge. What is data visualization? Data visualization presents data graphically. It can use charts, graphs, and diagrams. Visual data is easier to understand as compared to the textual data. It highlights trends and patterns quickly. Why are charts and graphs used in data analysis? They simplify complex data. They make comparisons easier. They improve clarity and understanding. They help in quick decision making. What is a table? A table displays data in rows and columns. It organizes data neatly. Tables makes comparison easy. Tables are commonly used in reports. What is data accuracy? Data accuracy means correctness of data. Accurate data produces reliable results. Error reduces data accuracy. Accuracy is essential for analysis. What is data consistency?
Data consistency means uniformity of data. Same data values should match across datasets. Inconsistency causes confusion. Consistency improves data reliability. Why is clean data important for analysis? Clean data is free from errors. It improves accuracy of results. It reduces misleading conclusions. Clean data support correct decision making. Question number 21. Describe how data science help business make informed decisions and provide two industry examples. Data science analyzes large data sets to find patterns and trends for decision making. It helps predict future outcomes using models and historical data. It improves efficiency by identifying problems and optimizing process. It supports better customer understanding and personalization. Example 1 is retail, predicting customer buying trends and managing inventory. Number 2, healthcare, predicting disease risk and improving. Identify 3 ways data science contributes to machine learning and artificial intelligence. Data collection and preparations to provide quality training data. Feature selection or engineering to improve model performance. Model evaluation using metrics to check accuracy and reliability. It helps detect bias and improve fairness in AI system. Differentiate between supervised learning and unsupervised learning. Supervised learning uses labeled data input with correct output. It learns to predict the output based on examples or previous data. Examples classifying emails as spam or not spam. Unsupervised learning uses unlabeled data, no correct output given. It finds hidden patterns or groups in data. Examples grouping customers into segments based on behavior. Question number 24. Describe in everyday examples that illustrates reinforcement learning. Reinforcement learning is learning through rewards and penalties. The learner improves by trying actions and seeing the result. Everyday examples learning to ride a bicycle. Correct balance and steering act like rewards, that is success. Failing or losing balance acts like a penalty, that is failure. Over time, the learner improves by repeating successful actions. Question. Write the appropriate machine learning model for each scenario. Part 1 is sorting mixed fruit, apple, banana using example, that is supervised learning. Learning to ride a bicycle for sport events, reinforcement learning. Group Lego blocks by colors, no label needed, unsupervised learning. Teach siblings to reorganize pictures with examples, that is supervised learning. Train to a toy robot to find its way out of a maze, that is reinforcement learning. Write the appropriate machine learning model for each scenario. Clean your rooms to attend a party, rewarded base, that is reinforcement learning. Teach computer to recognize shapes, square, triangle, circle, that is supervised learning. Arrange books by size, choice, ease, grouping, unsupervised learning. Find similarity in ice cream flavors, unsupervised learning. Unlock rewards in a video game, that is reward-based reinforcement learning. This is chapter number 5, and I will cover almost all possible short response questions from this chapter, that is application of computer science. What are application of computer science? Computer science की applications क्या है? Application of computer science refer to real life uses of computing technologies.
They solve practical problems in different fields. Computer improves speed, accuracy and efficiency. ये उसका पर्पस है. ये आप क्या दीजिए. These are the advantages of this computer science. Computers improve speed, accuracy and efficiency. Example include education, healthcare and business. Question number 2. Describe how IoT can help traffic monitoring. IoT uses sensor and smart devices to collect traffic data. Sensor monitor vehicle speed, density, and road conditions. Real-time data help manage traffic signal efficiently. It reduces congestion and improve road safety. Question number 3. What is Internet of Things, that is IoT? IoT is a network of interconnected smart devices. Devices collect and share data through the internet. IoT enables automation and remote monitoring. Example includes smart homes and smart cities. Question number 4. Describe the benefits of using blockchain technology in maintaining a digital ledger. Blockchain store data in decentralized manner. Records cannot be easily changed or deleted. It ensures transparency and trust. It reduces fraud in transactions. Question number 5. What is blockchain technology? Blockchain is a distributed digital ledger. Data is stored in blocks linked together. Each block is secured using cryptography. It is used in cryptocurrencies and finance. Question number 6. Differentiate between speech recognition and voice recognition. Speech recognition identifies what is spoken. It converts speech into text. Voice recognition identifies who is speaking. It is used for user authentication. What is artificial intelligence? AI enables machines to mimic human intelligence. It allows learning, reasoning, and decision making. AI systems improve over time using data. Examples include chatbot and recommendation systems. Briefly describe how AI-based system can cause injustice to some people. AI may be biased or incomplete data. This can lead to unfair decisions. Certain groups may be discriminated against. Ethical AI use is necessary. What is machine learning? Machine learning क्या होती है? Machine learning is a subset of AI. It allows system to learn from data. Model improves performance without explicit programming. Example includes spam filters. Question number 10. What is NLP, natural language processing? NLP enables computers to understand human language. It produces text and speech data. NLP is used to translation and search engines. Example, voice assistant. Question number 11. Describe how predictive text based on NLP helps in online searches. Predictive text suggests words while typing. It speeds up search queries. It improves accuracy of results. Example is Google autocomplete. What is data privacy? Data privacy protects personal information. It prevents unauthorized data access. Privacy law regulates data uses. User consent is important. How is computer science used in healthcare? Computer stores patient records. AI helps in disease diagnosis. Medical imaging uses computer systems.
Telemedicine improves access to care. Question number 14. How is computer science used in education? Online, online learning platform provide remote education just like Zoom, Moodle, Blackboard like that. Digital assessment improve evaluation. Educational apps enhance learning. Virtual classroom, sport collaboration. What is smart city technology? Smart city uses technology to improve services. IoT manages traffic and utilities. Data improve city planning. It enhances quality of life. What are smart homes? Smart homes use IoT devices. Devices can be controlled remotely. They improve comfort and security. Example includes smart lights. How is computer science used in banking? Online banking system manages transactions. ATM uses computer networks. Fraud detection uses AI. Blockchain improves security. What is facial recognition technology? Facial recognition identify individual using facial features. It uses AI and image processing used in security systems, raises privacy concern. Question number 19. What is automation? Automation uses machines to perform tasks automatically. It reduces human efforts. Automation improves efficiency used in industries and factories. What is e-commerce? E-commerce is buying and selling online. It uses computer networks. It supports digital payments. Examples include online shopping websites. What is cloud computing? Cloud computing provides services over the internet. It includes storage and software. Users do not manage hardware. Examples include Google Drive. How does computer science help in business? It improves decision making using data analysis. It automates business processes. It enhances customer services. It increases productivity. What is cybersecurity? Cybersecurity protects systems from attacks. It secures data and networks. It prevents hacking and malware. It ensures safe computing. What is ethical use of technology important? Ethics ensure fair use of technology. It protects user rights. It prevents misuse of data. It builds trust in technology. How does computer science impact daily life? It, it improves communication. It simplifies daily tasks. It enhances entertainment. It supports modern lifestyles. This is chapter number 6, Impact of Computing. I will cover all possible types of short response questions from this topic. Question number 1. List the importance of safe use of the internet today. Number 1. It protects user from online fraud and scams. It prevents misuse of personal information. It helps avoid cyberbullying and harassment. It ensures secure online communication. आपको इन फोर पॉइंट्स का सेफ यूज आना चाहिए जो कि यहां पे हमने मेंशन किए हुए हैं. State 4 ways to protect personal information online. Number 1. Use strong and unique passwords. Do not share personal details on unknown websites. Enable two-factor authentication in your accounts. Avoid clicking suspicious links or emails in WhatsApp, chat, on the emails. You should not click on the unwanted or suspicious links. Question number 3. Mention 3 benefits of cloud computing.
The benefits are it provides access to data from anywhere. It reduces hardware and maintenance cost. It offers scalability and flexibility. You can easily increase the volume of the data, increase the volume of the hardware devices. It's easy and flexibility. Why is cybersecurity essential in today's digital era? The need is it protects system from hacking and malware functions. It secures sensitive personal and business data from unauthorized users. It ensures safe online transactions. It maintains trust in digital systems. Question number 5. Name 3 common types of cyber crimes. Number 1 is hacking. Number 2 is phishing. Number 3 is identity theft. What would you do if your friend faced cyberbullying? Support and listen to your friend. Encourage them not to respond to the bully. Report the incident to the platform or authorities. Inform a trusted adult or teacher. What is cyberbullying? Cyberbullying is harassment using digital platforms. It occurs through social media, messages, or emails. It can cause emotional and psychological harm. Safe internet use helps prevent cyberbullying. What is phishing? Phishing is a cybercrime to steal personal information from other users. Fake emails or messages are used. It tricks user into revealing password or data. Users should verify sender authenticity. What is malware? Malware is a harmful software. It damages or disrupts computer systems. Examples include viruses and ransomware. Antivirus software helps protect system. Question number 10. How does cloud computing impact business? It reduces IT infrastructure costs. It enables remote work. It improves collaboration. It supports business scalability. Question number 11. What is digital footprint? A digital footprint is data left online by users. It includes social media posts and browsing history. It can be positive or negative. Users should manage their online presence carefully. What is data privacy? Data privacy protects personal information. It controls how data is collected and shared. Privacy law help protect users. Users should review privacy settings. How does computing impact in education? It enables online learning platforms like Zoom, Moodle, Google Classroom, like that. It provides access to digital resources. It improves teaching and assessment methods. It supports remote education. How does computing impact healthcare? Computers store medical records. AI assist in disease diagnosis. Telemedicine improve patient access. Medical imaging uses computer systems. What is online fraud? Online fraud involves cheating through the internet. It includes fake websites and scams. It causes financial loss, and awareness helps prevent fraud. What is identity theft? Identity theft is stealing personal information. Criminals misuse stolen data. It can cause financial damage. Secure password help prevent it. What is two-way factor authentication? Two-way factor authentication. It adds an extra layer of security. Users verify identity using two methods. It reduces unauthorized access. Example, password plus OTP on your phone. What is digital addiction? Digital addiction is excessive use of technology. It affects mental and physical health.
It reduces productivity. Balance uses is important. How does computing impact communication? It enables instant messages and emails. It supports video conferencing. It connects people globally. Social media improves interaction. What is ethical use of technology? Ethical use means responsible use of technology. It respects privacy and rights. It avoids misuse of data. Ethics builds trust in technology. How does computing affect employment? It creates new jobs opportunities. Automation replaces some jobs. New skills are required. Continuous learning is important. What is social engineering? Social engineering manipulates people. It tricks users into sharing information. It is used in cybercrimes. Awareness helps prevent it. What is ransomware? Ransomware lock user data. Attackers demand payment. It causes data loss. Regular backup reduce risk. What is online safety awareness? It teaches safe internet practices. It helps identify online threats. It protects users from cybercrimes. Education improves awareness. How does computing improve quality of life? It saves time and effort. It improves access to information. It enhances healthcare and education. It supports modern living. This is chapter number 7, digital literacy, and I will cover all possible short response questions from this topic. Question number 1, define digital literacy. Digital literacy is the ability to use digital tools and technologies effectively. ये क्या होता है? ये ability होती है जिसमें हम digital use और technology को use करते हैं effectively. It includes searching, evaluating, and creating information. It ensures safe and responsible use of technology. What is information collection? Information collection is the process of gathering data and information. It is used for research, analysis, and decision making. ये इसका purpose बता दिया गया यहाँ पे. It involves online and offline sources. List the sources of information collection. Website and search engines, books and digital libraries, survey and interviews, social media platform. What is reliable information? Reliable information is accurate, authentic, and trustworthy. It comes from verified and credible sources. It supports correct decision making. What is misinformation? Misinformation is false or incorrect information. It is shared without intent to harm. It spreads on digital platform and mislead users. How can we evaluate online information? Check the credibility of the source. Verify the author and publication date. Compare multiple sources. Check the domain and avoid biased content. What is digital footprint? Digital footprint is the record of online data and activities. It includes browsing history, posts, and interactions. It affects online reputation and privacy. Define data privacy. Data privacy protects personal and confidential information. It controls data collection, storage, and sharing. It prevents the misuse of data. What is plagiarism? Plagiarism is copying someone else's work without giving credit. It is unethical in academic work. It requires proper citation to avoid it. How can we avoid plagiarism? Cite sources properly. Use quotation marks for exact words. Paraphrase in your own words. Use plagiarism detection tools like Turnitin. What is cyber
Ethics. Cyber ethics refers to the moral principles of technology use. It includes respecting privacy and intellectual property. It avoids illegal and harmful activities. State the benefits of digital literacy. Improves access to information. Enhances communication skills. Supports learning and education. Increase job opportunities. Question number 13. What are primary sources? Primary sources provide original and first-hand data. They are collected directly from the source. Example includes survey, interviews, and observations. What are secondary sources? Secondary sources provide processed and interpreted data. They are based on primary sources. Example include books, articles, and reports. Differentiate between primary and secondary sources. Primary sources contain original data collected directly. Secondary sources contains analyzed or interpreted data. Secondary sources are based on primary sources. What is a search engine? A search engine is a tool used to find information online. It searches the internet using keyword. Example include Google and Bing. What are keywords? Keywords are words or phrases used in searches. They help to find relevant information. They improve search result. Why is critical thinking important? Critical thinking helps in evaluating information. It helps to avoid fake news and misinformation. It improves decision making. What is fake news? Fake news is false or misleading information. It is created to manipulate or deceive people. It spreads through digital platforms. How can we identify fake information? Check authentic and trusted sources. Verify facts from multiple sources. Avoid sensational headlines. Use fact-checking websites. Differentiate between misinformation and disinformation. Misinformation, false information shared without harmful intent. Disinformation, false information shared when intent to deceive. What are the characteristics of reliable information? Accuracy, authority, currency, objectivity. What are the types of digital footprint? Active footprint, data shared intentionally. Passive footprint, data collected without user awareness. List some online safety practices. Use strong passwords. Avoid suspicious links. Adjust privacy settings. Do not share personal information. State ethical issues in the digital world. Cyberbullying, piracy, identity theft, privacy violation. Question number 1. Define qualitative research. Qualitative research focuses on opinions, experiences, and behaviors. It uses non-numerical data, and methods includes interviews, observation, and case studies. Define quantitative research. Quantitative research क्या होती है? Quantitative research deals with numerical and measurable data. It is used to test hypotheses and analyze trends. Methods include survey, experiments, and statistical analysis. Differentiate between qualitative and quantitative research. Qualitative, non-numerical, exploratory, opinion-based. Quantity, numerical, measurable, and data-based. Qualitative use interviews, quantitative use uses surveys and statistics. What is questionnaire design? Questionnaire design is the process of creating structured questions. It helps collect accurate and relevant data. Questions should be clear, unbiased,
and easy to understand. What are open-ended questions? Open-ended questions allow detailed answers. They provide opinions and explanations. For example, what do you think about this product? Then you have to write it about that product. What are the closed-ended questions? Closed-ended questions have fixed answers. Examples include like yes, no question and multiple choice questions. Another example is do you like this product? Then you have to give the answer in form of yes or no. What is market validation? Market validation checks whether a product has real demand. It reduces business risk. It uses customer feedback and testing. Why is market validation important? It confirms customer needs. It reduces the chance of business failure. It improves product success. What is a customer profile? A customer profile describes the target customer. It includes age, interest, behavior, and needs. It helps in planning marketing strategies. Why are customer profile important? They help understand customer behavior. They improve product targeting. They reduce marketing cost. What is business pitching? Business pitching is presenting a business idea to investors or stakeholders. It explains the problem, solution, and value. Its goal is to gain funding or support. What are key components of a business pitch? Number one is problem statement. Number two, solution. Number three, market opportunities. Number four, business model. What is an elevator pitch? An elevator pitch is a shortest business presentation. It usually lasts 30 to 60 seconds. It highlights the main idea quickly and clearly. What is a value proposition? A value proposition explains the unique benefits of a product or service. It shows why customers should choose it over competitors. It highlights value and uniqueness. What is market opportunity? Market opportunity refers to potential demand for a product or services. It includes market size and growth. It helps in business planning. What is business model? A business model explains how a company earns money. It describes revenue generation and cost structure. It defines the target customers. What is call to action in pitching? A call to action asks for a next step. Example, schedule a meeting or invest in the idea. It encourages decision making. What is search volume in research? Search volume shows the popularity of a keyword. It includes user interest. It is used in market research. What is bias in questionnaire? Bias means unfair influence in questions. It leads to incorrect or misleading results. Questions should be neutral and objective. What is customer feedback? Customer feedback is the response or opinion of users. It helps improve product and services of any company. It supports better decision making. What is problem identification in entrepreneurship? Problem identification is recognizing real world issues or needs. It helps in developing useful solutions. It is the first step in entrepreneurship. What is solution creation in entrepreneurship? Solution creation means developing ideas to solve problems. It focuses on innovation and usefulness. It leads to successful products or services.
Why is research important in entrepreneurship? It helps understand market needs. It reduces business risk. It supports better decision making.